सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लंदन ड्रीम्स। मैं आज थोड़ा टेम्परेचर डाउन हुआ था, अभी शायद 13 या 12 डिग्री चल रहा है, सो इसलिए बाहर निकला। क्योंकि अभी कुछ दिनों से बाहर निकलना तो एकदम मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑफ कोर्स माइनस में टेम्परेचर गया था और स्नो भी आया था। सो उस कारण मैं वीडियो भी थोड़ा डिले किया था, क्योंकि बाहर निकलना थोड़ा स्पेशली मुश्किल हो रहा था। सो आज का वीडियो स्पेशली मैं एकोमोडेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि हाउ इज़ द एकोमोडेशन इन लंदन। एकोमोडेशन का बेसिकली यहाँ पे लंदन में 3 टाइप के एकोमोडेशंस होते हैं। लंदन या थ्रू आउट द यूके 3 टाइप के होते हैं। ऑफ कोर्स पहला टाइप क्या है कि आप यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन लें। If you go for the university accommodation, it's the best option, but of course it's not the most efficient or most affordable option. दूसरा ऑप्शन आपका है private rooms, private rented house and private flats, which in my as per me is like the best option, but of course it's need a certain amount of time for that, which you have to give it. Because otherwise you will be not able to get, and you cannot risk from your home country. There are some disadvantages of renting a flat and renting a house or even a room, so there are some disadvantages on that phase. And third option is the student private accommodation, which is also a good option. Like my few friends have taken private student accommodation, because I would not say it is affordable इतना नहीं होता है, लेकिन it's quite similar to the university accommodation, but you will get a good amount of size. Like यहाँ के अगर university accommodation में आप रहेंगे, so you will get a very small rooms, like a match box room जो हम मुंबई में कहा जाता है. So match box size room होता है वो, so वो small होता है, and you pay a quite high amount for that. So it's not the case in private accommodation. Like you will get sometime, of course there are sometimes you will get small rooms also, but there are most chances that you will get some good rooms from private accommodations. And if you talk about the price is quite similar, or you can say a bit lower than university accommodation. So ये basic dividation of रूम्स या एकोमोडेशंस है यूके का या लंदन का. सो इन तीनों में ऑफ कोर्स आप फिट करेंगे और कोई फोर्थ ऑप्शन नहीं है. यू कैन गो फॉर दीज ऑप्शंस ओनली, बट ऑफ कोर्स दे हैव डिफरेंट क्राइटेरियाज फॉर डिफरेंट ऑप्शंस. सो एक अगर आप यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन की मैं बात करूं तो ऑफ कोर्स इट्स क्वाइट इजी एंड हैसल फ्री. इफ़ यू कैन पे अ गुड अमाउंट, इफ़ यू हैव like affordability, you can pay a certain amount for university accommodation. I would recommend that, because it's a hassle free process and you will get a certain amount of security for booking that accommodation during the payments. क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फ्रॉड हो रहे हैं यूनिवर्सिटी से accommodation से related, and you will not face from that, because university handle करती है ये सब. So of course they would not consider any fraud activities during the booking of accommodations. तो आप जब university accommodation book करेंगे, so you will be able to choose कि आप कौन सा रूम लेना चाहेंगे. so यहाँ पे 2 टाइप का रूम होता है, या तो आप स्टूडियो लेंगे या तो शेयर लेंगे. so if you are taking a studio, so studio में बेसिकली क्या होता है, यू हैव टू यू विल गेट अ प्राइवेट बाथरूम विद योर अटैच्ड रूम. सो दैट्स द बेनिफिट ऑफ दैट. ऑफ कोर्स इट्स इन्वॉल्व अ कॉस्ट फॉर दैट, बट इफ़ यू कैन पे यू कैन गो थ्रू इट, बिकॉज यू ऑफ कोर्स इट्स अबाउट द कंफर्ट जोन. अगर आप पे कर सकते हैं सो यू कैन गो, but if you cannot pay, I would not recommend for the university accommodation. If you cannot pay high fees, or you are trying to after coming in the UK, you are trying to afford your own accommodation fees through your part time job. So मैं नहीं recommend करूँगा, क्योंकि अगर आप part time से निकाल रहे हैं अपना accommodation future में, so it's quite not possible.
or you can say you will face a lot of difficulties. So I'll not recommend that. And also, like, you will get shared option in some universities, like आप share कर सकते हैं किसी second person के साथ वो room, or you will get like normal kitchen which is like 4-5 flatmates are using a washroom which is a bit cheap. अगर आप 2-3 लोग आ रहे हैं, so it's a good option अगर university आप choose करेंगे. अगर so if you share it, your price will be also divided. Like for example, if the price goes till 1200, I'm just giving an example, so आप 600 पे कर सकते हैं. So of course it's a quite affordable amount, and you will get a good amount, like good comfort zone. You'll be able to like stay in the university accommodation near the university. You will be having some friends, which is a benefit in any university accommodation, क्योंकि उस accommodation में university के ही लोग ज़्यादा मिलेंगे और you can build connection. So that's the main benefit of the university accommodation. तो ये सारे options मिलेंगे आपको during the booking of accommodations in London. And आप इन्हीं में से of course you have to choose it. So if मैं अपना experience अब share करूँ, मैं university accommodation भी रहा हूँ initial of I think so 6 months, and now I am like in a private room, a rented room, which I would say a little bit cheap and best options for anyone if they can afford a certain amount of time, क्योंकि उसमें टाइम लगता है. आप ऐसे नहीं कि बुक कर दिए और हो गया, जो यूनिवर्सिटी एकोमोडेशन या प्राइवेट स्टूडेंट एकोमोडेशंस में होता है. सो यू हैव टू गिव सम टाइम, एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू आर नॉट इन द यूके, इफ़ यू आर बुकिंग फ्रॉम बैक फ्रॉम होम कंट्री, एंड जो मोस्ट ऑफ द लोग करते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. शॉर्ट में मैं आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता दे रहा हूँ. मैंने जैसे इनिशियली आपको बताया, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन एक्सपेंसिव होता है. Of course, if I talk about the disadvantage first, expensive होता है, and like you cannot choose the room. Like university accommodation में आप university choose करती है room, and if you are living with the shared, it is a possibility that you can like आप जो second person आपके साथ रह रहा है शायद आप choose कर सकते हैं, and maybe sometime not. So that's the problem with the university accommodation. That's the main problem, I would say. And if I talk about some advantages, of course you can build connections. It's quite a safer option if you are like booking from your home country, क्योंकि उन लोग book easily हो जाता है, और there's no involvement of any fraud or something like that, क्योंकि ये university directly handle करती है. So never heard any cases like fraud from the university accommodation. So I would recommend that if you can afford it, of course. So ये आपके advantage disadvantages हैं. So मैंने आपको पूरा basically bifurcation दे दिया है कि अगर आप if you can afford, you can choose the university accommodation or private accommodation. Both are quite similar. Private में भी private student accommodation थोड़ा cheap हो सकता है, बस ये फ़ायदा है थोड़ा. I would not say too much. So that's the benefit. So I'll recommend that you come in the UK and book the room, because of course the fraud involvement. So आप Airbnb रहिए कुछ weeks and you can like book the room. So these are the options and these are the ways you can book, and these are the advantages and disadvantages. Now I will talk about some other procedure, like if you are renting an apartment or a flat, there are some different process involved in that. If you are just renting a room from a rented house, it's not so a hassle. But if you are renting an apartment or a house, there is a process. So आपको वहाँ, of course you can book from the Gumtree website, spare room. You will get some good apartments from there, but you will be not there will be not involvement of direct landlord, क्योंकि वो फिर आपका हैंडल करेंगे Gumtree वाले या जिस एजेंसी से आप बुक कर रहे हैं. So you have to be aware with the agency also.
सो समटाइम दे आस्क फॉर अ 6 month बैंक स्टेटमेंट जो आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑफकोर्स इतना ह्यूज अमाउंट पे करना है अगर आप एक रेंट पे कर रहे हैं अपार्टमेंट के लिए और फ्लैट के लिए, क्योंकि एक इंडिविजुअल के लिए पे करना इट्स अ ह्यूज thing. And even like you are renting an apartment, it's a big apartment, so the landlord has to be assured that ये बंदा पे कर सकता है कि नहीं. So they'll ask for a 6 month bank statement or something like that, or maybe a sponsor who has a sponsored job, or you who's living in the UK for a long time. So उनका इन्वॉल्वमेंट होगा एज अ गारंटी कि वो गारंटी लेगा कि आप पे कर सकते हैं. So these all is the process for like renting apartment or a big flat. And like if you are going for just a rented room like me, it's a easy, like of course you will get a double size room or a single room. If like अगर आप couple as a husband wife आ रहे हो, so you will get a double size room where you can live as a husband wife inside the room. It's like a good size room, and you will pay a small amount if both are working, or even like a single person is working. I think you can afford it. So yes, these are the process. So लंदन में जोन्स होते हैं, मैं उसका अलग वीडियो बनाऊंगा. So कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि किस लाइक जोन में लें, या ये प्लेस सही है वो प्लेस सही है. So it all depends upon you. Some people were asking about like Wembley and different places. So there are some cheap places. आप Google करेंगे, so you will get some like affordable, I would say, places. Like currently I'm living in Willesden Green, so it's a affordable place and a good place, क्योंकि it's like a 20 minutes train for central London, and a direct train for Stratford, which is a zone 3. So that's the advantages of living here, because यहाँ से काफ़ी कनेक्टिविटी सही है. आप सेंट्रल जा सकते हैं, आप इनफैक्ट जोन 3 जोन 4 तक जा सकते हैं. डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, मतलब डायरेक्ट ट्रेन्स है. सो दैट्स द एडवांटेज. सो इट ऑल डिपेंड अपॉन यू एंड योर यूनिवर्सिटी. मेरी यूनिवर्सिटी की बात करूँ, इट्स जस्ट अबाउट 15 minutes train, so and 20 minutes I think, so 20-25 minutes बस. So ये easy हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि of course during undergraduate you have to like quite be regular for your studies. So ये सब consider आपको करना पड़ेगा if you are being on a student visa. So आपको एरिया उसी हिसाब से चूज़ करना पड़ेगा जो थोड़ा क्लोज हो यूनिवर्सिटी से. मैं नहीं कह रहा हूँ आप सेंट्रल में ही ले लीजिए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी सेंट्रल में, मेरी भी सेंट्रल में, बट आई एम लिविंग इन काइंड ऑफ जोन 2 and 3 बिटवीन में है मेरा एरिया, विल्सन ग्रीन. सो यू हैव टू फाइंड दैट प्लेस विच इज़ लाइक टिक फॉर एवरी रिक्वायरमेंट ऑफ योर रिक्वायरमेंट. सो ये पूरा प्रोसेस है यूके का. अभी आपको फेस करना पड़ेगा इशू. ऑफ कोर्स आई कैन नॉट प्रोवाइड like rooms for you. You have to do research. You can connect me on Instagram, and I would surely help if you want about the places, about the price, about the frauds. Like somebody texted me about the rented apartment, so like they were paying from back in home country. सो आई वुड नॉट सजेस्ट दैट, क्योंकि मैंने जैसे मेंशन किया इनिशियली, आप अगर रेंटेड अपार्टमेंट्स या रेंटेड रूम्स में रह रहे हो, सो यू कैन नॉट लाइक टेक दिस रिस्क इन लाइक इफ देयर इज़ अ पर्सन हु यू कैन ट्रस्ट ओवर हियर इन द यूके. सो तब तक आप, मैं नहीं कहूँगा ये रिस्क लीजिए, या इनिशियली आप यहाँ आके ले सकते हैं, क्योंकि यू कैन विजिट दैट प्लेस, यू हैव द कॉन्टैक्ट्स. सो यस, सो मैं आपको थोड़ा व्यू देता हूँ. अभी करेंटली मैं वही गार्डन में हूँ, बट इट्स लाइक अ डिफरेंट गार्डन, बिकॉज इट्स नॉट अ डिफरेंट, बट इट्स लाइक अ अटैच्ड गार्डन ऑफ दैट. यू हैव टू क्रॉस अ स्मॉल ब्रिज टू कम ओवर हियर, एंड इट्स अ ह्यूज. वो जो था वो काफ़ी स्मॉल था जो मैं इनिशियल वीडियोज़ में बनाया था, एंड यू कैन सी फ्रॉम हियर द व्यू. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. अगर मैं कुछ पॉइंट्स या मिस कर दिया हूँ, सो यू कैन लाइक कमेंट एंड टेल मी. आई वुड लाइक श्योरली लाइक कंप्लीट दैट इन द नेक्स्ट वीडियो.
Hope to see you in next video. Thank you for seeing this video, and connect with me on Instagram if you have any queries. See you. Bye bye.